आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 1 पार्ट 3। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। पहले हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकंड डेमोक्रेटिक, कम्युनिटीज, गवर्नड, कांग्रेस, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, मॉन्यूमेंट, ब्रिटिश रूल, ड्राफ्ट। फिर है आपका प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, पार्लियामेंट, राइट टू इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेटिक, पार्टीशन, रिफॉर्म्स, फेडरलिज्म। नेक्स्ट है आपका पंचायती राज, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, colonial rules, directive principles of state policy, secularism, right against exploitation, tracking। ये सारे आपके बेसिक टर्म्स है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन थे? बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर, जिसको हम डॉक्टर अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टेट? स्टेट क्या है? द स्टेट रेफर्स टू अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट represents a sovereign people who occupy a definite territory. Next question, what does federalism mean? Federalism refers to the existence of more than one level of government in the country. Next question है आपका, what do you understand by a secular state? A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. Next question, what is democracy? Democracy क्या होती है? Democracy is a form of government in which we choose our leader so that they can exercise power responsibly on our behalf. Next question, what is universal adult franchise? Universal adult franchise means that the right to vote should be given to all adult citizens without the discrimination of caste, color, class, religion, or gender. Next question, explain right against exploitation. Right against exploitation क्या है? Right against exploitation. The Constitution prohibits human trafficking, forced labor, and employment of children under 14 years of age. Next question, what is secularism? Secularism is the right of the citizens to practice any religion. A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. आई होप आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर समझ आ गया हो। आगे हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दिस allows citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. Next question, explain right to freedom of religion. Right to freedom of religion क्या है? Right to freedom of religion, religious freedom is provided to all citizens. Every person has the right to practice, profess, and promulgate the religion of their choice. Next question, write a short note on culture and education right. Culture और education right पे क्या है? Culture and education right. The Constitution states that all minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture. What do you mean by directive principle of state policy? Directive principle of state policy क्या है? Was designed by the member of the Constituent Assembly to ensure greater social and economic reforms and
to serve as a guide to the independent India state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses. Next question, right to freedom. Explain. This include the right to freedom of speech and expression, the right to form association, the right to move freely reside in any part of the country, and the right to practice any profession, occupation or business. नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स. की कंपोनेंट्स क्या है फंडामेंटल राइट्स के? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज. ये हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स है, कंपोनेंट्स है. आई होप आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ गया हो. आगे हम पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. पहला क्वेश्चन है आपका, मेंशन द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. की फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फेडरलिज्म, parliamentary form of government, separation of powers, fundamental rights, secularism. Discuss the difference between state and government. State और government के बीच में हमने difference बताना है. Government is responsible for administrating and enforcing law. The government can change with selection. Election. The state of the other hand refers to a political institution that represent a sovereign people who occupy a definite territory. Explain the Indian state, the Nepali state, etc. The Indian state has a democratic form of government. The government or the executive is one part of the state. The state refers to more than just the government and cannot be used interchangeable with it. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द थ्री मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. हमने थ्री फीचर्स बताने हैं, फंक्शंस बताने हैं गवर्नमेंट के, जो मेन ऑर्गन्स है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर द थ्री ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट. These are the legislature, the executive, and the judiciary. The legislature refers to our elected represented. The executive is a smaller group of people who are responsible for implementing law and running the government. The judiciary refers to the system of courts in this country. Why does a democratic country needs a constitution? जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उनको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? A democratic country needs a constitution because it serves several purposes. First, it lays out certain ideals that form the basic of the kind of country that we as citizens aspire to live in. The second important purpose of a constitution is to define the nature of a country's political system. The third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves. What is meant by this is that we might at times we feel strongly about an issues that might so against our larger interest, and the constitution help us guard against this. नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ये हमारे तीनों हमारे डेमोक्रेटिक नीड बताए हैं जो कंट्री को चाहिए होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक्सप्लेन राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी क्या है? राइट टू इक्वालिटी मीन्स all persons are equal before the law.
This means that all persons shall be equally protected by the laws of the country. It also states that no citizens can be discriminated against on the basis of their religion, caste, or sex. Every person has access to all public places, including playgrounds, hotels, shop, etc. The state cannot discriminate against anyone in matter of employment. इसमें कहना चाह रहा है कि सारे पर्सन्स के लिए सभी पर्सन्स के लिए एक ही लॉ है, किसी के लिए अलग है किसी के लिए अलग है, ये कुछ नहीं है और सबको हम एक ही सिटीजन मानते हैं, कोई भेदभाव नहीं करेंगे और कोई भी हम जो भी पर्सन्स है उनको कोई भी हम मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर, a constitution help serves as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis on the way in which they want the country to be governed. The constitution often lays down the rules that guard against this misuse of authority by our political leaders. Constitution ensures that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups. The constitution helps to protect us against certain discussion that we might take that could have an adverse effect on the larger principles that the country believes in. इस क्वेश्चन में हमने बताना था इम्पोर्टेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की सारी कंट्रीज में, कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हेल्प करता है सेट करता है किसमें रूल्स के लिए और प्रिंसिपल बनाने के लिए कि सभी पीपल जो भी कंट्री में है वो उसको कर सके यूज कर सके। और जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो ले आउट करते हैं रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। किसकी मिसयूज करते हैं? जो अथॉरिटी कौन मिसयूज करते हैं? पॉलिटिकल लीडर। ये हमारा डोमिनेंट ग्रुप भी है जो हमारे जो यूज करते हैं इट्स पावर अगेंस्ट और प्रोटेक्ट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। हमने इस वीडियो में पढ़ा था basic terms, very short question answers and long question answers. I hope आपको ये सब समझ आ गया हो। थैंक यू।